Hello, hello, guys. Welcome back to our small, chotu sa, cute sa, bade ghar ke andar stream. We are back. We are back, and Formula One is back in Belgium. One of my favorite Grand Prix. It's gonna be an amazing. बहुत मजा आने वाला है यार. Charles Leclerc is on pole. Let's see what will happen. What's your prediction and your girlfriend's prediction, Shub? Well, I have no predictions for the race, to be honest. Scene hai अच्छा. ki there'll be no dry running, so it's absolutely everyone's ball game to play for. Obviously, Max Verstappen, A whether क्या couple of scene क्या है मेरा laps will be dry. I mean, अभी whoever scene क्या है gets अभी it. तक wet है क्या पूरा क्लीन है क्लीन क्लीन है ना तो आएगा पूरा भाई क्लीन पीछे से अपना 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 क्या बोलते हैं लायन अपना लायन आएगा पीछे से सबकी लेने के लिए लायन नाइस आई लाइक द नेम लायन है ही इसका एम्बलम ना भाई पर लायन पूरे बेल्जियम के अंदर तू देख पूरे ग्रैंड स्टैंड के अंदर सब ऑरेंज 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 ही ऑरेंज भरा पड़ा है पूरा भाई उसका उसका ही ग्राउंड है वो he's यस always I think I heard him say in one of the interviews where Spa is one of his favorite tracks, and I think in 20 last year he was so dominant on या this 14 से racetrack. फर्स्ट That I remember him telling me, telling me, it seems, telling the audience that he enjoyed the race thoroughly. So I'm हाँ expecting him to be damn quick, and I don't expect anybody to be at his pace. But what's interesting is, can Piastri outshine Norris? भाई बहुत बड़ी headline है. I mean, भाई if he मजा आ can जाए do that, he's living up to he's his already reputation. outshined he's already outshined on a Saturday Yeah, for sure, for नहीं sure. I think there's potential, but race pace. We saw Norris get the बट better भाई of him निकल के last आया race. लौंडा भाई छाती फटती है उसके लिए भाई मजा आ गया देख के लौंडे को यार मेरे को He बिल्कुल has नहीं this लगा था composure about him. He has this composure about him where he's just like, yeah, like Max Verstappen used to have, like, yeah, I was born to do हाँ this kind of a thing. या ठीक है ना क्या बड़ी बात है ओके क्या इतना इतना फंस किस बात का है अरे चिल ना हाँ. anyways Akshit hello Rajas hello sure Akshit again what is saying Max will be back यार business as usual तो करना ही पड़ेगा ना Suzano is saying will Max अरे win एक completely बात एक बात है भाई कोई अगर मैक्स को उड़ा दे तो यार Max has been I don't think so this season he has been into cautious. that position but यार अभी देख last year जो था ना और last year भी ये same conditions थी P14 से वो आगे लेके गया पता है मैक्स वर्स्टैपेन को है ना पता है भिड़ते कम है जब मैक्स वर्स्टैपेन फॉर एग्जांपल 2021 की सिल्वर्स्टोन ग्रांड प्री ले ले जब उसको पता है कि वो उससे आगे नहीं जा सकता लुइस हैमिल्टन के आगे नहीं जा सकता तब वो शायद भिड़ने की बात सोचे जब वो रिस्क ले मैक्स वर्स्टैपेन को क्या भिड़ना नहीं दिक्कत है अरे दूर रहे ना पीछे से अरे आके दूर रहे कोई अरे अपना है ना वो बंदा कौन है वो अपना ओकॉन नहीं तो अपना ग्वान यू जो सेंड इट करेगा तो पूरे दोनों एल्पिन को उड़ा सकता है तो अपने The मैक्स only वर्स्टैपेन क्या person चीज है that I think can send it, if you remember, I think Interlagos Grand Prix last year, ओकॉन when वी वांट ओकॉन वी वांट ओकॉन no, that was that I think that was 2020 or 2019 or something, but I was talking about Ricardo. भाई Ricardo send it यार, वो उसको पता नहीं आत्मा सी आ गई थी लास्ट टाइम और भाई उसने दे मारा तो वो हो सकता है स्ट्रोल हो सकता है स्ट्रोल वर्सेस ओलोंजो आई थिंक ऑस्टिन ग्रांड प्री so that yeah also yeah was yeah something very similar. Uh, hello Neeraj, hello Gamer Pro. Hope Max crashes in an interesting race. यार अगर मैक्स क्रैश कर गया या मैक्स नहीं ले पाया जो वो आई मीन द परफेक्ट चल रहा है उनका 14 रेस तो जीत चुका है 11 ग्रांड प्रीज एंड 3 स्प्रिंट रेसेस अगर वो नहीं ले पाया तो भाई क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है यार वैसे ही पूरा सीजन कितना इंटरेस्टिंग है मैक्स को हटा के टर्न 1 Leclerc P1 lap 5 Max P1 let's see Yash I'll put you on board for that अच्छा मेरे को बता यश अगर ये ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा और ऐसा नहीं होगा तो तू क्या करेगा मेरे को वीडियो चाहिए ये क्या चीज है यार सही है लो एक सही है दूसरे के मजे लो तो क्या यही तो करने बैठे मजे ही तो लेने बैठे भाई अच्छा तो ट्रैक मैप डालना भाई वही मैंने आज सेटअप करके रखा करके अरे वाह आज पूरी सेटअप तैयारी के मतलब साथ अपने गीत भाई मैदान पे उतरे हुए हैं बस ये ना हो जाए कि कुछ कुछ नहीं भैया होगा बहन कुछ नहीं बहन होगा जी I've देख seen other लें people stream it I mean Break F1 uses it also so I'm अरे pretty वो sure ट्विच you पे can यूज do it करता है ना नहीं नहीं बाद में YouTube पे डालता है वो the अच्छा streams सही he puts his streams on YouTube now so he puts it अच्छा in those I've seen that
मेरे को ना बताना गाइज ये आ रहा है या नहीं। अरे एक सेकेंड मेरी जान, गाइज मुझे बताना ना ये आ रहा है या नहीं। एक मिनट, एंटायर स्क्रीन, ये देख लो, ये आ रहा है, बताओ। इज इट ऑन? यस, इट्स ऑन। इमेजिन। इसको भी छुपा सकते हैं क्या? ये छुप तक सकता है? ऑटो हाइड होता है क्या? पोजीशन लेफ्ट बॉटम, या टर्न ऑटो हाइडिंग, कूल, बढ़िया। हाँ, चैट क्या बोल रही है? चैट भी देखते हैं, मैं साइड में देख रहा हूँ चैट। अगर पेरेस वॉन देन तो मजा ही मजा। पेरेज, लुइस, शौर्य मजा पूछ आएगा रहा है तब लुइस जब और कोई। मैक्स इन योर ओपिनियन। फटाफट बता दे एक वर्ड के अंदर, लुइस या मैक्स। मैक्स, जस्ट बिकॉज इज अ आह, मशीन। आए हाय, क्योंकि तूने मैक्स बोला मैं लुइस बोलूंगा। Just a machine, dude. He doesn't give a shit about the world. He just cares about Come racing. on, oh come on, if you forgot Lewis Hamilton award when his time was there. हाँ, I mean, yeah. Lewis was a machine also. प्रमुख क्या बोल रहा है? माई प्रेयर्स हैव कम ट्रू, आई सुपर चैटेड यू गाइस टू गिव होप फॉर मैक्लेरन at the first race. Yes, yes, Pramukh, thank you so much. Your prayers have definitely flourished. देखते हैं इस रेस के अंदर क्या होता है। और सुपर चैट ग्रोजो, करोगे तो हाँ है, पियास्ट्री भी जीत जाएगा। सही बात भाई। 10,000 रुपए और पियास्ट्री को तेरा भाई जिताएगा। Oh gosh. ग्रोजो अब क्या कर रहा है? मेरे ख्याल में ग्रोजो इंडी कार में खेल रहा इंडी कार में ही है, हाँ। है। ए तू प्रशांत, तू तू अलग ही कॉपीराइट, चल साले, गलत बात कर रहा है। ऐसी बातें क्या नहीं बोल करते रहा यहाँ हूँ? पे हम। He's saying the word that is not to be named. वोल्डेमॉर्ट का नाम ले लिया हाँ, इसने। okay. लुकिंग फॉर F1 merch in India, where can we get it? A lot of places, अब इतने सारे है ना, अभी कस्टम भी Puma.com. बनाते हैं। हाँ बता, वापस बता। Puma.com. Puma से ले पूमा, भाई, Puma is the पूमा, official partner. पूमा पे क्या वो खाली सबका मिलता है Puma क्या? की वेबसाइट पे। चालू अच्छा हो गया। अच्छा, मैं लेट चल रहा हूँ, ओ फक। ओ, गया ओ, गया गया गया, कोई तो गया। कौन गया? फक। बचाया यार, क्या बचाया है? ये साइंस का चालू था। स्यापा। सर्जियो पेरेस ले गया लैप है? पियास्ट्री को पंक्चर नहीं आ ले गया गया? लगता है। पियास्ट्री को पंक्चर आ गया है। ओहो, वर्स्टैपेन P4 पे आ गया। वर्स्टैपेन भाई चालू है। I've got damage. ये कार्लोस को पेनल्टी मांगता है। अरे क्या किया कार्लोस ने? मैं बहुत देखा नहीं बुरा यार, अभी हुआ। अरे रिप्लाई आने बाबा। दे। Bet on which lap will Max Verstappen overtake? Lap 7. Where's Max? Max is P4. A lot of, I think Max got the advantage of the fight between Sainz and Piastri. Not ideal. I mean, Sainz was sending it down the inside on Hamilton, and he locked up. He was about to hit him, and then Piastri came on the inside, and they were 3 wide going into the first corner, and somehow they did not spin each other, which is credit to them. But Tuki Gadi. सही बात है। But भाई, look at the distance यार, already Perez has built up on Leclerc. Yeah, it's 2023 who's important winning because of WTC? the RS train. Who's winning Yeah. WTC? ये क्वेश्चन क्या है? WDC World Drivers Championship. नहीं तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा? मतलब पूछने वाले ने भी दाद देता हूँ मैं पूछने वाले के लिए। मजा आ गया, सवाल है आज का ये। क्या ये तो सवाल है टॉन्ट कर यार। रहा है भाई, ये टॉन्ट कर रहा है भाई। हाँ, क्योंकि हाँ। मैं लुइस बोला और तू मैक्स बोला, तो ही इज कनेक्टिंग दैट डॉट। तो ये मेरे को चिढ़ा रहा है, बोला साले कौन जीत रहा है, औकात मेरे। सही बात है।
Do you think Jensen Button and Weber were underrated drivers? Top three. Jensen Button already won a world championship, yeah. So I don't think so. He's anything underrated anywhere. अब यार इसके पास अच्छी गाड़ी थी, वो जीता. Obviously, he was far superior. Virtual safety car. And then Mark Webber, I think because of, I mean, this is my personal view. वैसे तो he was already a Too veteran cute, when yeah. Sebastian Vettel came. I mean, in Red Bull. But yeah, Weber also had his fair share of glory. Didn't win enough for sure. Maybe because when he had or could, Vettel was already there. So I don't think so. They're underrated by any way. What do you think, Shub? I think it was one of those cases where Vettel had, Weber had finished his prime, like he was not in his prime. And Weber was, Vettel was in his prime, sorry. He was a young kid, Yeah. doing really well and, Yeah. having the right kind of approach. And Weber, with his experience, just did not have pure speed, on paper. So yeah, it was far. Not Yeah, but watching Piastri, the race like, at the you don't do Belgium that on Grand Prix. science. Yes, Piastri, his race is gone. Yeah, but look where he tried to stick in the wheel, like just back out. He's not going to give you space there. क्या बोल रहा है ऋषभ? भैया पेरिस को क्या हो गया? रेड बुल में इतनी लो परफॉर्मेंस. अरे यार, रेस लीड कर रहा है यार, कहाँ लो परफॉर्मेंस? बढ़िया है. अरे आज चीयर करना है यार, होने तो जो होता है पहले. It's actually, DRS is enabled, and now Verstappen should fly by Lewis Hamilton. Sector 1, somebody's going slowly. Who's going slowly in Sector 1? That's a green flag. आप लोग सारे जीपी रेस क्यों नहीं लाइव स्ट्रीम करते हो? यार ये मेरी गलती है. आई थिंक शुभ तो अवेलेबल होता है. ये मैं हूँ. ये क्या है कि पूछ रहा है कि आप सारे ग्रैंड प्री क्यों नहीं देखते हो साथ में हमारे लाइव स्ट्रीम पे? मतलब यार ये थोड़ा सा क्या है कि माय वाइफ इज एक्सपेक्टिंग एक्चुअली, तो मैं लिमिटेड टाइम ही दे पाता हूँ हर किसी चीज को. हाँ भाई, पैशन प्रोजेक्ट है, फुल टाइम जॉब नहीं है. मैट और टॉमी नहीं है हम लोग. जो हो ऐसे वाले रिएक्शन दे. But yeah, I guess it's a passion project, and sometimes we have priorities, don't we? Although we try our best, we try our best to do each and every race. Ooh, Even, here comes Fernando Alonso. Damn, under braking. Science is struggling. Science struggling. I think it's because of the damage itself. नहीं तो यार Alonso क्या? Like Aston Martin's pace has कुछ just slowly wandered off. Like, कल अच्छा डिफेंड किया कार्लोस, वो पेरेज अगेंस्ट हैमिल्टन. देखा तूने रेस में? हाँ, इट वाज नाइस. ये सीन देख रहा है तू? अभी लेक्लर्क की वजह से हैमिल्टन को डीआरएस मिल रहा है, जिसकी वजह से इज एबल टू होल्ड ऑफ मैक्स फॉर नाउ. The Ferrari is a fast car even without a DRS. अच्छा, टेल मी which lap P1 Max predict? P1, nice overtake. He has to overtake Perez for that. Yeah. Maybe lap 15. 15? 17. So we'll be able to see the fight between both of them. I mean, will the team come in? Yeah. No, I think there'll be no. If from what I know, Red Bull, there'll be no. I think it'll just be sensible for Perez to. I think if there's an overtake, it'll be a very clean overtake. क्योंकि यहाँ पे scene क्या है ना? You overtake after Urush, right? And that's a very clean overtake. It's the straight is so long that you already have your nose way in front normally if you do. भाई ये कौन सी ट्रेन है? Using the DRS to pass.
इस ट्रेन का कंडक्टर साइंस बन चुका है क्या, या अलोंसो बन चुका है, क्या है ये? ये क्या टीसी बन के घूम रहा है वो अलोंसो? नहीं, अलोंसो नहीं, साइंस है वो। है अलोंसो तो आगे पहुंच मैप गया। मैप पे अलोंसो निकल गया। हाँ हाँ, अच्छा साइंस है वो। हाँ। करंट पोजीशन ऑफ मैक्स P4 भाई। हाँ, विप्रा बोल रहा है माई उसका प्रिडिक्शन लैब 16 है, तो सिमिलर है, वेरी गुड। डू यू गाइस थिंक ईदर लेक्लेग और साइंस विल लीव फरारी नेक्स्ट ईयर? यार आई थिंक दे शुड यार, आई थिंक लेक्लेग शुड यार। मतलब इफ आई वाज लेक्लेग आई would have probably chosen a Red Bull, or if Red Bull is offering, I think Red Bull will be offering. So either a Red Bull or No, I McLaren. don't think Red Bull would offer Leclerc a seat. I think they are better off offering Norris a seat. Norris will not leave. Why The whole not? car is around Norris यार. Norris won't leave. लुइस का क्या स्कोर I है? mean, ए यूजर स्कोर नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे पोजीशंस होती हैं, तो P3 चल रहा है, वो थर्ड पोजीशन पे चल रहा है, पोडियम पोजीशन। किवियत बैक टू F1। किवियत, डैनियल किवियत, व्हाई विल डैनियल किवियत, हु विल कीप डैनियल किवियत? he's also Russian, which doesn't help. Sorry? He's also Russian, which doesn't help, right? Yeah, which yeah, you can't get sponsorship, you don't have a team and whatever. Whatever, he's been off. Or just bad for PR for teams. Leclerc and Russell should swap their team. Why will Russell want Ferrari, especially in the current Oh man, form? Russell But will yeah, just go crazy at Ferrari. रसल तो स्वेयर करते करते, मैं तो बोल रहा हूँ सुनोडा का डाल देना चाहिए फरारी के अंदर, जो गालियां पड़े। मजा आएगा भाई। मजा आएगा। कार्लोस साइंस इज ड्रॉपिंग लाइक अ स्टोन यार, कोई मजा ही नहीं है इनको देख के। Lando Norris has मैक्स gone वर्स्टैपेन just gone ओवरटेक्स ल्यूइस backwards. हैमिल्टन भाई, ले गया लौंडा, ले गया? ले गया। क्या बोल रहा है, अभी तक दिखा नहीं मेरे को। ओ आ आएगा गया आ आएगा। गया। ओ योर थॉट ऑन पेरिस पास्ट 5 yes. परफॉर्मेंस? माय थॉट क्या है यार, ये जग जाहिर है, अच्छा नहीं है, फैक्ट है यार, ये थॉट नहीं है, इसमें थॉट क्या करेगा। इनफैक्ट टॉप 6 ले ले यार, हंगरी भी मिला लेना उसके अंदर। मतलब हंगरी के पहले 5 रेसेस के अंदर तो वो Q3 भी नहीं आया था, हंगरी में Q3 आया तो P9 आया। अरे शुभ कहाँ गया तू? इधर ही हूँ, खा रहा इधर है? हूँ। खा हाँ ले खा रहा कैमरा हूँ। पे खा ले, क्या हो गया तो? एक ही बात है, क्या है इसमें? हम्म। But have you been watching like this weekend? It's just been a crazy weekend. Yeah, it's been a long Like in weekend. I terms of like it. tire selection, in terms of Yeah. people, just like penalties, people hitting each other. Yeah, no, it's a damn good weekend, yeah. It's a damn good weekend. बस We वर्स्टैपेन को निकाल दे तो भाई बहुत ड्रीम F1 चल रहा है यार अभी। क्या बोल रहा है यार, क्यों निकाल दे वर्स्टैपेन को? अगला जीत रहा है तो निकाल दो उसको, ये सही है यार। वो क्रिस्टियन हॉर्नर बोलता है ना, द बेस्ट वे टू गेट हेटेड इन दिस स्पोर्ट इज टू विन। इतनी मेहनत करके यार, अपन ने देखा है क्या 2013-14 से जब वो मर्सिडीज जीतता था। पर मर्सिडीज के अंदर भी अलग टॉन्टे थे ना, ये वाले। पहले तो नॉरिस की, वो रॉसबर्ग की और लुइस की चलती रहती थी, मजा आता था वो देखने के अंदर। फिर बाद में एक आध दो सीजन के लिए फरारी थोड़ा बहुत कंपटीशन, 2019 के अंदर कंपटीशन, 2020 तो उन्हीं का ही था। 21 के अंदर कितना मजा आया अपन ने, वो क्या है, वो अपन ने वो क्या बोलते हैं, डोपामीन का वो जो एक हिट लिया था अपन ने 2021 के अंदर, उससे थोड़ा डाउन हुआ। दिस आई अंडरस्टैंड। No, I think it's just not that. I think the whole regulation was designed to do this. You know what I mean? Like the regulations promised what we are seeing, other than that one car that is just ahead and super या dominant. या But like kudos to like Red Bull for नहीं नहीं, keeping डूइंग keeping their throttle.
on and not breaking at all at any point, just not taking it easy. But Even the idea is that on a, it is an exciting season. Like, you don't know when Ferrari yeah, is going to win, when Hamilton is going to win, when Aston yeah, is going to win, or when a McLaren is going to win. yeah. Like, No, second very best has similar been just point. fluctuating in the entire season. I was about to, you know, give kudos to all these two teams. I mean, you see, Red Bull was ठीक है 2022 के अंदर भी very good. The performance was amazing. Ferrari and Mercedes were in competition. Mercedes was like dropped like a stone because of their stupid idiot, whatever the problems were. You know it better than me probably. But other than that, when you see these, you know, teams like McLaren and Aston Martin coming from nowhere and fucking them up. I mean, amazing यार, नहीं क्या यार? कब देखा है अपन ने मिड सीजन के अंदर एक टीम उछलती है और वो अमेजिंग अलग लेवल पे ले जाती है यार, नहीं क्या यार? कितना मजा दिला रहे हैं यार ये मैक्लेरन वाले. That's अब very true. Like, even the other teams are like surprised. इवन द अदर टीम बिल्कुल सही बोल रहा है. तो अभी कौन सा अभी क्वालिफाइंग फॉर्मेट था? आई थिंक इट वाज हंगरी इटसेल्फ. जोक व्हेन यू यार, फक जोक एंड यू गॉट इन Q3. यू सी बोटास इन Q3. I mean, whatever happened in the race is a different thing, but qualifying में तो कितना मजा आया. You see Williams doing fantastic this. I mean, Pat Fry's coming back to Williams. भाई मेरे को तो कितना खुशी हो रहा है ना कि क्या बताऊं मैं. Pat Fry's coming back to Williams, one of my favorite CTOs. He deserves everything that he is. I mean, उसको कुछ Enstone की टीम ने कोई He was use at ही नहीं किया Alpine, है. no? And he's left from Alpine, right? Yeah, he left from Alpine, and Alpine didn't use him at all. Yeah, why? He was such a stupid idiot bugger. That guy, Laurent Rossi, he didn't do anything. चूतिया साला यार. Sorry for my French, but एकदम बेवकूफ है. भाई. That guy is such a. I mean, Uh, he's gonna down that. Like, I see Alpine only going down, to be honest. resurgence Like, होगा यार. I wouldn't be that 100 million investor of Ryan Reynolds. Like, I'd rather invest in Williams, to be honest. I mean, their investors are also Bahrain, yaar. Come on, Bahrain. When Bahrain invests something somewhere, there. I mean, what do you think? Bahrain, I think, owns like Bahrain's whatever is like the fund owns like 30, 35, 40% or something of McLaren. So I don't think so. That's gonna be like bad or something. But frankly, coming to my point, what I think is uh, Pat Fry wasn't used at all. Plus, it's a French team when it comes to Alpine. Anyways, I forgot what was the point we were making. But yeah, Max Verstappen is behind Charles Leclerc. About to overtake right now. Goes on the right and overtakes him so easily, like hot knife in a cold piece of butter. Oh, is he gonna send it? Oh, he's gonna make him go around the outside. Yeah. Whoa! What are you tonguing? That was such a good overtake. Yeah, it was delicious That overtake. turn is incredibly, like, it doesn't, like, from that angle you cannot see it, but when you do it on simulator you realize that it's like downhill braking, so Yeah, you can brake it's much downhill. later, Yeah. right? You can brake much later, Yeah. but when you try to send it, your rear starts getting unsettled because you're braking and turning in this corner. Yeah. So it's very easy for you to just like get a very rear, like loose rear end. And when you try to be happy on throttle, you just spin off. I mean, I've done that so many times in the game, but it's a challenging corner. It doesn't look very challenging because you have such a long straight that your brake temperatures go down. So it's not the easiest, like your temps are not in its ideal working range at that point. And that's why that's what makes the turn even harder, because the response from your tires is not at its full potential. सही बात है, बहुत ही इंटेलिजेंट बात. सही, मैं भी ये सोच रहा था एक दिन. What is the expected strategy? So I think the expected strategy is in the win. I think the rain's gonna arrive at any moment. Yeah, two-stopper. It's a two-stopper, but they are expecting a shower in 10 minutes. Yeah. So if it's a dry race, it's expected to be a two-stopper. You can risk it to be a one-stopper.
But I think people I with the mean, mediums only on might just have an hards. advantage. Yeah, I think People with the Norris. mediums Nahi. might just be with an advantage because this rain, if it comes in 10 minutes, you are Hmm. going to get to about the 18 lap range, which was about the soft tire limit. So if the rain comes 5 minutes later and you have to make the call, then the medium tire drivers might just be able to make the right call. Having said that, if they know that, then they will pace themselves so that the tire lasts. So interesting because Perez has not really pulled out, has he? It's just a three. We are used to seeing Verstappen being in front and just being 5-10 seconds ahead, you know. Hmm. But Perez has not That's really true. been able सही to बोला एकदम. pull away from यार ये Leclerc. अच्छा पॉइंट है. ये तो अच्छा पॉइंट है यार. बिल्कुल सही बोला यार तू. So Fernando has been told that you can use everything from the tire, use everything, and he's on a mediums. Hmm. Can Perez become world champion? Not in my. Can, yes. Will he? I don't think so. Oh, here we go. Charles Leclerc, plan B for a Bravo. Plan B for Bravo. Does he remember the plan? Remember Carlos? I don't I know. don't remember what plan B was. No, no, I mean, still, it's good that it's just plan B. नहीं तो इनके तो plan F, G, H, What? I, J, K हो जाते हैं भाई. Why is Alonso pitting? Why is Alonso pitting? I mean, for the change of the tire. Yeah, but he was on a I'm fiddling medium. so many things. It's lap 11. Did he pit for what? Yeah, he It's for pit for mediums. hard. No, pit No, I for pit hard. for mediums. It No, I shows saw the hard. mediums go on. पता नहीं क्या पता ये गलती होगी. It ये shows गलत कर hard. रहे Yeah, हैं. yeah, you're right. Yeah, you're right. But I saw the mediums go on. I don't know. Let's see. Plan B means भागो. भगाओ. Bhagao. मेरे को तो वो मीम याद आ गया. भागो. I think this was which movie? I don't remember. I think it was Ajay Devgan movie. कितने लोगों ने अभी तक वो लिया? Where the fuck is my phone? Where's my phone? He's on the mediums, dude. That graphic is wrong. I can see अभी भी mediums on दिख रहा. Alonso. Yeah, I mean, we can see it's medium. अच्छा शाहरुख की मूवी थी क्या वो? भाग ओम शांति ओम I guess, right? Yeah, ओम शांति ओम I guess. I think this is our fan. I don't know. आ गया अपना सिम्बा. Why do you think? Who do you think will finish in third step of the podium? I think Leclerc will finish on the third step of the podium. Shub, can you do me a favor? Please ask your girlfriend about the same. About what? Who's gonna finish on P3? Her predictions, guys. Shub's girlfriend's predictions goes absolutely right. Absolutely right, bang on all the time. She's the person you should ask every time you're making a fantasy team. I'm telling you. She should definitely have a fantasy page where she gives out knowledge of that. अभी जेम्स वाओ Who से do बात you कर रहे think? हैं. Who do you think? कौन आएगा थर्ड स्टेप ऑफ द पोडियम पे? एक मिनट मैं बात सुन रहा हूँ जेम्स की. अच्छा. We can't see her if you're asking her to come in the frame. Who's your all-time favorite
I think my all-time favorite is Niki Lauda. Generally, people's all-time favorite are generally Ayrton Senna. भाई मर्सिडीज की क्या प्रॉब्लम है? लास्ट रेस में पोल से P4, Mercedes are in इस the मैच में pits P3. on the mediums. क्या बोले? Hamilton boxing for mediums. They corrected the Alonso's graphic. Yeah, man, I think Aston's going proper aggressive in this race. Apparently, they're going to do another stint of 12 laps, 13 laps, and they're expecting rain to come in 10 laps. So maybe that's the reason they pitted earlier, because they feel like pushing is better. And is that Alonso behind? No, that's Stroll behind Stroll. Hamilton. That's Okay. Stroll behind Hamilton. Stroll and Hamilton are fighting. Who could even think about the same last year? कौन सोच सकता था ऐसा भी हो सकता है? Yeah, so Alonso, Hulkenberg pitted, so that's why he's behind. Raising rain intensity 2 and 3, 12 minutes away. 12 minutes is 12 laps around this lap? I mean, no, it's around 8 laps, isn't it? Actually, I want to see lap times. I want to see who's doing what lap times. Perez in the pits, the first driver top 4 to come into pits. मंजीत आपका आंसर है ना, यही करेगा, शुभ ही करेगा, but I think Shub is concentrating on something else. Till then, I'll answer the rest of the questions. Where do you guys see Alonso Driver Championship standing in the end of the season? I think he's going to be like P4, P3 or P4. He's currently P3, but it's already half of the season, so it's very difficult Red for Bull anybody just to did a come there. slowest pit stop for Perez, 3.2. Kitna? Hey, not that slow. Not that slow. Hamilton is under investigation. क्या दिन चल रहा है भाई Hamilton का? Yeah. What's your view on McLaren? Fantastic, यार Jinesh यार, मेरे को लगता है amazing यार. Today's race, I think they're having a stream of bad lucks, so that's what it is. Plus, I mean, the rain is not helping a lot. Qualifying के अंदर भी the rain didn't help them to come into positions. Then Piastri and Sainz का जो भी हुआ, उससे नाटक हो गया. But they're doing a fantastic season till now. I think they have 87 points, out of which 70 points पिछले 3 रेसों में आए हैं. Look at the contribution यार, मजा नहीं आ गया क्या? I think आपका नाम रशिद है and Max Verstappen को आप जिता के रहोगे, मुझे तो लग रहा है आज. Do you think Max can take another win? Yeah, why not? He's already in P1 position, but he has not pitted yet. Has everybody else pitted? No, so yeah. Leclerc Max also Verstappen came in. Hamilton's come in. I think Stroll hasn't pitted. Yeah, I think Max is pitting Gasly. Max is now pitting. Khali Gasly and Max has not pitted. Now I don't know where is Gasly. Hamilton is really pushing. Leclerc is pushing. So everyone's like making time on Verstappen. So do you think Leclerc can? No, Leclerc is too far. So there's a question for you. Who do you think is going to finish P3 on the stream? Huh? I want to say Leclerc. You want to say? Leclerc. So according to our Leclerc is going to finish P3. My money is on Leclerc. Yeah. Geet says his money is on Leclerc. Geet is just going to follow you. Geet is just be like, as you say in Konkani, Oi Saiba. Hi, Saiba. You're my tortoise. You're my luck. $15.38. Padsy Where did Verstappen come out? There's no Padsy. Padsy, if you're there, can Leclerc do it?
And all the Leclerc fans say it. Give out Leclerc OP in the chat, Oh, guys. Leclerc is plus 3. Definitely. Can drivers So go he's coming without third, pit you see. stop? Rakshit, drivers can't go without pit stop unless and until it's a wet condition. If it's a wet condition, they don't care about the tires. But if it's not wet, then they have to change one tire compound in a race, or else you're disqualified. Gap between Perez and Max 1.3. For some time, I'm removing this. For just some time. बहुत मेहनत करी है भाई, तू भी जानता है. Bilkul. Then Max Verstappen is quite close to Perez. He's 1.3 seconds behind only. Verstappen put in a really fast lap time. Even Leclerc's girlfriend betting on P3. Why not? After a Is long she? time, भाई. Uditansu. Amazing name, huh? Uditansu का मतलब क्या होता है भाई? Please Wait, बताना. Leclerc got a new girlfriend? I Then don't his know. girlfriend ditched him like last year. अरे बड़े लोगों की बहुत होती है यार, तुमको क्या पता. Hello sir, long time no see. Hello Nipun. Hello Nipun. Nipun is one of the founding subscriber of the channel. Literally. Founding members of F1 with Geet. Yes. Ooh, look at founding this. The member. two Red Bulls. The two Red Bulls are at it. Very close. But how's like they're so close? I mean, the gap like 2 seconds vanished in like a blink of an eye. कैसा हुआ? ऐसा कैसे? Yeah. I don't know. Like, I mean, he looks much quicker than Perez. So usually, like Max has been much quicker than Perez in race pace as well. Udanso means rising sun. Nice. So he must be from Japan, huh? I'm just kidding. I'm so sorry. I'm so sorry. Just kidding. Your favorite F1 team, not Real Madrid for sure. Very recently I came to know that अरे वो कौन सी टीम थी? Juventus. I think Juventus is owned by Ferrari itself. Juventus. The owner of Ferrari's owner is my Really? friend Drog Baba told me this. बड़े लोगों की बातें. सप्तर्षि, how are you bro? सप्तर्षि is also one of very old member यार. हम साल भर से एक साथ स्ट्रीम करते हैं, मतलब बहुत मजे किए हैं. Ooh, सप्तर्षि, man, look how much. प्रशांत pit stop controversy. Leclerc versus Hamilton. I don't think that's happening though. रेड बॉल हमेशा मैक्स को प्रायोरिटी देते हैं यार, ऑब्वियसली वर्ल्ड चैंपियन है. अलोंसो के क्या विचार हैं? बढ़िया ड्राइवर है भाई. भाई अलोंसो भाई गॉड है. ओवरटेक्स. भी आ गया आला रे आला सिम्बा आला. Max Verstappen आला. Police. Nice यार, nice. You remember all the dialogues यार. That's nice. देख भाई मैं निकला बाहर से around the outside. I told you, right? Sorry, He would guys. overtake after Urush, and it will just be a clean overtake because that's the DRS effect around here. Hey, Good lap race. 17, bro. Bro, lap 17. I told you he would overtake at lap 17. That was nice. Yeah, I forgot to give you a shout on that. Nice, that's nice. Guys, शुभ ओपी इन द चैट हो जाए भाई. शुभ ओपी इन द चैट हो जाए भाई. क्या बात है, मेरा भाई ने प्रेडिक्ट करा भाई. क्या बात है. Dude, that is fucking good. Like to predict the exact lap. And you number. predicted in lap That's what, what 5? it is. Lap 4 or 5 you predicted it. Nice. Amazing. Yeah. My girlfriend goes like, yeah, that's because I'm right beside you apparently. Ah, Apparently it's a vibe thing. why वारी. हवाएं चल रही लक की. That's nice. हवाएं चल रही. Oh gosh. Sainz is going to Not retire bad. the car. Lap 17. Srajana is saying शुभ ओपी. विवेक कुमार नायक बोल रहे हैं wow. Sir, Max P1, do you think Hamilton will overtake Leclerc? I don't think so. This is not his race for some reasons. I don't know.
हाँ, फरारी विल फक अप फॉर श्योर, उसके बाद वो P3 आ जाए तो बात अलग है, पर उन दोनों की लड़ाई बहुत मुश्किल से देखने नहीं मिलेगी। होगा 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 वो अभी वो होने वाला है, बहुत सारे लैप हो है। रहा है, फरारी विल स्टार्ट happening। स्ट्रगलिंग विद देयर टायर वेयर, और बारिश आएगी, एक लैप बाद में आएंगे, सो के उठेंगे, तो बहुत सीन है, डोंट वरी। भाई पर लुक एट दिस यार, आई रसल, मीन स्ट्रोल एंड गैसली हैजंट इवन पिटेड एंड देन वो फैंटास्टिक है। किसी की औकात नहीं उनको पीछे छोड़ दे। आई आई थिंक मीन सुनोडा इज लाइक 1 सेकंड बिहाइंड गैसली यार, फक मैन, ये क्या हो रहा है? सुब, I अरे mean, वाह। what's helping oh, Lando's boxing. No, what's helping Ferrari is they don't have to worry about science. He's just like Tata goodbye हम्म। science, you know. But what has happened to McLaren all of a sudden in this race? ऋषभ बोल रहा है They're प्रभु चरण struggling. कहाँ हैं आपके, तेरे लिए बोल रहा है शुभ। ग्रिड क्या चल रहा है? अरे मेरी जान, लगा रखा है तेरे लिए पूरा मैप यार, ग्रिड देख ले तू। So happy to be a part of another watch along. Thank you, मेरी जान. It's all because of Shub and his vibe. When do you It's think all Gasly because will of quit? I don't know. Let's see. anything Gasly will pit. Yeah, it's an interesting strategy. They just decided to go long so that maybe they could just count on the rain, like save themselves a stop. Saptarshi बोल रहा है rain in 4 minutes. Is he like predicting it right? Can you see that? No, he's predicting what Ferrari is telling science, Sorry, and sorry, whatever sorry. Ferrari's meteorology department says, never trust it. अच्छा मैं क्या है, ये कम सुन रहा हूँ, ज्यादा पढ़ रहा हूँ, so probably. But ठीक है, good shout सप्तर्षि. Thanks for pointing out. यार कार 44 क्यों लेक्ले को ओवरटेक नहीं कर पा रही है यार, शिट यार. I think similar But expression. actually, like Leclerc is pulling away from Hamilton. Yeah. McLaren का फ्यूचर ब्राइट है क्या? बिल्कुल है. Will Nico Norris ever going to be back in F1 race? I don't think so. Nico, what? Nico Rosberg? Dude, he's Oh given yeah, up on sorry. F1. वो अपनी जिंदगी Sorry जी यार. रहा है. या हल्क, मैं भी रॉसबर्ग सोच रहा हूँ पर पढ़ हल्क रहा हूँ. वो भी बेचारा सोच रॉस रहा है, लिख हल्क रहा है. Has Hamilton pitted? Yes, Hamilton has pitted. Intensity will go 2 to 3 in 2 minutes. Ooh, ये देखा, ये जितनी एक्यूरेट फरारी का प्रिडिक्शन है ना, उतनी हाँ एक्यूरेट अगर उनकी स्ट्रैटेजी होती तो बहुत आगे पहुंच हाँ. जाते हैं लोग. अरे यार फरारी का स्ट्रैटेजिस्ट इंडियन है यार, तुम ऐसी बात नहीं करोगे उनसे यार. क्या हो गया? तो यार भाई ने थोड़ी गलती कर दी तो. आई मीन इस साल ही इंडियन है, ठीक है, और वो भी इंडियन नहीं है, वो ब्रिटिश इंडियन है. भाई every Indian is Indian. Once you're Indian, you can take an Indian out of India, but you cannot take out India from an Indian. True that. Very true. I know a lot of British people who have who are like Indian origins, and yeah, you see the qualities, bro. आज ही गूगल न्यूज का एक नोटिफिकेशन आया. there's a guy called Hirish Singh who's running for US presidency and he is an ex-Indian. He's an ex-Indian. What the fuck? I What is mean an I mean ex-Indian? he's an Indian origin American यार, whatever ex-Indian. Indian origin American. अरे IOC और वो जो भी होता है यार, हमको क्या पता, हम भारत में रहने वाले लोग हैं यार. हम भारत में रहने वाले लोग, दुबई में जाने वाले, मजा करने वाले दुबई में वाले Oh लोग my हैं यार. God. राम राम राम, ये कैसे तू भी बात है? बोलेगा मैं ex-Indian हूँ. I'm gonna call him ex-Indian now. अच्छा उसका नाम हरीश वर्धन है क्या? अच्छा. कैन बोथ एल्पिन ये फिनिश इन बारिश आ पोडियम? रही है, ये क्या हो रहा है? स्ट्रोल्स हो रहा है. चालू हो गई क्या? हाँ, चालू हो गई बारिश, दिख रही है. यार ओकॉन के पीछे एल्बॉन पड़ा है, तो सिमिलर ही स्टैट्स लग रहे हैं मुझे दोनों ही गाड़ियों के. ऐसा कुछ उखाड़ नहीं लिया है एल्पिन ने भी. प्लस उनकी जो मेंटल कंडीशन चल रही है, हो सकता है एल्बॉन को पॉइंट मिले. मैं तो चाहता हूँ एल्बॉन को पॉइंट मिले. Carlos Sainz message. This is Pepsi P. What is this? Is Pepsi P? I have no idea. I have no clue. Yeah.
So it is quite slippery now. And what's interesting is if people are going to try and overtake in these conditions, you might see a couple of spins because Spa is a lot of uphill, downhill. So you are अरे turning तू वो and छोड़, accelerating and braking. irrespective of the trying to take a risk while overtaking etc. I'm telling you, there was an instance, I think this was yesterday itself, while Alonso crashed because he stepped on a, what do you say, that curb. Yeah. Yeah, I mean, so downforce here vanishes like if you're on a bump or something, so we can't say a lot about anything else. But it's going to be an amazing thing for Russell, Gasly and Sonoda. I mean, not Sonoda, I think, who didn't pit? One sec. Oh, it's raining quite a lot apparently. Okay. We would destroy an Inter in these conditions, Max. Yeah, so think of a bias offset for the wet. Let's I think stay Russell and disciplined. Gasly did a There's a fantastic soft prediction. tire coming out on the. There's a soft tire coming out. Huh? Okay. Stroll is boxing for the soft tires. I mean, it's too dry for an Inters. They don't Yeah. expect the rain to come with that much intensity. But it's a and bit because wet. the cars are running. Yeah. Yeah, so because the cars keep running, the track, there's a dry line on the track. There is a so dry line it on makes the track. sense, Yeah. Yeah. Plus, It I makes think sense to put a nice soft. Plus, I also think that the medium compound will get cooler sooner, and probably a soft will retain more heat in itself because it gets heater soon because of the the temperature of the track is going down right now. Not just that, obviously that is true, but you want, in these conditions, you want the tire that gives you the most grip, and that is just a soft tire. So that's why there's just the simple decision is to pick up the soft. But how many of them will do it? I think people Everybody. will wait for it. I mean, I think people will wait for if you the cannot rain. go to an Inter, the soft is a choice of tire. It's as वो simple तो as that. ठीक है, but I think what Russell and Gasly should do it, but everybody else will do it? Stroll probably has done it for because he was down. कब इस pit stop के पहले क्या position थी? No, I mean, Can Stroll anybody tell me? wasn't that bad. Stroll wasn't that bad, to be honest. But why did he do it? But that was Stroll's first pit stop. Oh, okay. Was it? Yeah. One second, let me check. Oh yeah, you were right. It was his first tire change. Maybe it was like very bad. That's why he wanted to change. I mean, I think they did a good job pitting Stroll just at the right time. एरो 7 पूछ रहा है भाई, भारत से याद आया, भारत जीपी की टिकट करा लेगा, तो जा रहा है भारत जीपी? मैं? हाँ. No, I'm not in India during that time. Okay. मैंने भी नहीं कराई भाई. मैं एक्स इंडिया होने वाला हूँ. Yeah, you told me. For how long are you going? कितने दिन के लिए जा रहा है? कितने महीने के लिए जा रहा है? साल के लिए जा रहा हूँ भाई. 1 साल के लिए? यहाँ कौन संभालेगा ये जो मोटर खोल रखी है तूने? तेरे पार्टनर? My role is going to be a remote role. Like the on-ground execution is going to be by partners. I'm going to handle international relationships, brand making, getting in touch with companies from abroad, motorsport brands from abroad. Apun bhai wo sambhalega. Course content, course outline, course making. That's my expertise. Nice. No name corner. Who will win in a similar race? यार बहुत मोमेंटम का फर्क पड़ता है, बहुत चीजों का फर्क पड़ता है, तो कुछ बोल नहीं सकते. By the way, कौन सी कार? Is the car set up for Hamilton? Is the car set up for Verstappen? Which track? What conditions? You know who's the fastest driver on track right now? I'm not seeing that data. Who is it? It's Lando Norris. Nice. सर कोई डिस्कॉर्ड का सर्वर बता दो. Definitely... भाई कतई बारिश आ रही है भाई, कतई भाई बहुत आ गई बारिश. ये अभी इंटर्स का जरूरत होगा.
Yeah, this is. क्या डाल रहे हैं इसको? Let's see what रसल को क्या let's डाल see रहा है? what let's see Soft डाल रहा है भाई. what Russell Soft. does. Do you think Mercedes era will be back? Yes, can be back. I like how everybody is predicting that the rain is going to go away in 2 minutes. I mean, Spa is very unpredictable. Huh? Teams are being a bit over, you know. Spa is not, it's in a mountainous region, so you can never really predict with accuracy what's going to go on. यार ये इसका मंजीत का आंसर कर देना यार. ये मंजीत क्या है दूसरी बार question? सवाल पूछना. मैं इस लूट को देखो, आज P4 से स्टार्ट किया और P4 ही है. Last match poll. He's asking what's the issue with Mercedes. I mean, the issue is that they are slow. In long story short, I mean, नहीं, but he's asking कि पिछली बार P1 आया था, तो P1 थोड़ा स्लो थोड़ा P1 आता है. कौन P1 आया था? पोल पे था ना हैमिल्टन. Oh, और वो last P4 पे है. last race. लास्ट रेस. हाँ. और आज भी so ये that P4 का P4 ही है, कुछ इंप्रूव नहीं कर रहा. क्या प्रॉब्लम क्या है? So that was Hungary, wasn't it? Last race. Yeah, so it is so that basically, like we saw hints of this in Silverstone already, that Mercedes was the fastest car or the second fastest car in low speed corners. So whatever their car is, basically it's suited for low speed corners or low speed tracks. So at least after the updates, like their strongest point of the car is low speed, and that's why you saw Hamilton being so competitive in Hungary on one lap pace. So yeah, that's why they were strong, and over here they don't look as strong because the fastest team in high speed sections only is Mercedes. When I say high speed, I mean to say with long straights. McLaren are really good in high speed, but they are extremely poor in top speed. So if you have long straights like you have here, that is where McLaren does not have the edge in the race. Maybe over one lap, you can basically empty your battery and account for that small difference. But over a race distance, Ferrari was always expected to do better. So it's a lot about which team's strengths cater to what type of track they're running on. So that's why you see Leclerc doing quite well. You saw Sainz sending it and doing it quite well also. But also Retired. like this entire weekend has not been very representative in terms of the true performance of every car, because you saw quali that the track was ever evolving, so it was all about being the last person on track. And Max Verstappen out-qualified everybody by 8/10, which was solely because the track was evolving that much. So yeah, it's a lot more complicated than just saying, oh, he was P4 last race, so why is he not, like, he was P1 last race, why is he not P1 this race? Because he's slow on this kind of a track. So basically, That conditions makes doesn't sense. match. Yeah, the conditions are very, very important. Like, your boundary conditions is Plus, I think what governs your performance. there was a huge upgrade as well for the side pods, etc. for Mercedes, but because of multiple variable conditions that Mercedes can't predict, obviously, that's a reason that they're not able to use it as good as there. But I think Russell is doing a good job up and down the. नॉरिस भाई देख, नॉरिस क्या कर रहा है. नॉरिस P18 से P9 पहुंच गया. हम बातें कर रहे इधर. इतने ओवरटेक्स नहीं हुए उसके. देख अभी रसल ने उसको ओवरटेक कर लिया. तो नो, ही ओवरटूक रसल. नहीं ऐसा नहीं है. I mean, he just overtook Russell, and now Russell overtook him back. देखो क्या दिख रहा है. मैं तेरे टाइम पे आना चाहता हूँ. I mean, George Russell just overtook Lewis Hamilton. They passed Rouge. And जब जैसी ना हास की गाड़ी आएगी ना, मेरे को बता. ठीक है, मैं तब ऑन करता हूँ. हास की गाड़ी आ गई. ठीक है.
So Sonoda is overtaking a Haas. Is it So yeah, Sonoda? this one will It's overtaking. Ricardo. Yeah, it's Ricardo. It's Ricardo. Ricardo. अच्छा रिकॉर्डा Ricardo. अच्छा ये प्रेम बहुत बार पूछे ऐसा सवाल Whom are to you whom both are you supporting? frankly I'm Well, I supporting was P2 supporting Piastri this race, but sadly yeah Piastri is out. now ho Oh, now ho no. ना हो पाएगा हमसे. But yeah, I'm interested to see where Hamilton finishes. I think So, this race right now I'm supporting Leclerc for P3 um, supporting and Leclerc for P3. Why not? Yeah. yeah I mean underdog all the way हमारी तरह हम बैक बेंच चल रहे हैं Hamilton, like Leclerc underdog question. अरे I mean, yeah, अरे considering the last couple of races, yes. considering yeah considering it's a Ferrari Considering it's a I Ferrari. But it's the Ferrari. I want to start watching F1. Any advice? Yeah, F1 TV Pro का subscription खरीद ले भाई. Great advice. I like it. Very expensive. Good expensive advice. Listening to Geet Bear is like discussing something with a friend. तो दोस्ती तो है और क्या है भाई हम सब दोस्ती तो हैं. Yeah, थर देखा Science is Out देखा. Leclerc is out. What do you mean Leclerc is out? Maybe he's Science out of बोला the Science. pit lane? Acha, Science is out. It still looks rainy, huh, in Spa, even though it's not raining. Thermal dig, that's what they call it. Smooth operator. Fuck man. Smooth operator is that kind of a song that's made for something, huh? Okay, so Sergio says they cannot do it in one stop. But still यार तू एक बात देख Norris even after 2 pit stops he's at P7 Yeah, that is नहीं क्या? because recently something happened. Like his car came alive in the rain. Like literally came alive. He made all those moves in the rain. मेरे को ना एक While मिनट everybody was. एक मिनट मैं तू चैट भी देखना मैं एक मिनट अब तुम्हारे हवाले ये चैट साथियों चैट मेरे हवाले पे है रिकार्डो वापस आ गया क्या हाँ वापस आ गया रिकार्डो the PH was maker Sense is out I know that was quite funny, wasn't it? Okay, what do we have? There are battles going on track everywhere. Like, damn, 341 with DRS. Stroll's P7 Norris. कोई और भी जीतेगा क्या मैक्स के अलावा कोई और तो जीत लो Who can be क्या लगा Ferrari रखी है also being great. यही कोई और देखते रहेंगे जीतेगा क्या क्या मैक्स को जीतते हुए सही बात है भाई क्या करें हम if you want to see somebody else win I'm telling you go and watch MotoGP That is true. MotoGP is quite exciting. there was Soft an tire. era I think They're doing a Ricky 3-stop. Ponting, Matthew Hayden, everybody was there in the Oh, Australian yes. cricket team where they won fucking everything. They were winning like I think 3 World Cups उन्होंने जीते थे भाई साहब अलग लेवल Cricket में वो ना? लेवल चल रहा है हाँ क्रिकेट में Hayden, Gilchrist, Ponting, yeah Gilchrist Bretley, everybody was McGrath, Bretley Shane McGrath Warne. yeah और कौन था उस टीम में? Steve Waugh. it was Steve Waugh something के बिना यार भी जीतते हुए वो.
गाइस गाइस पूछे ना, कोई गाइस बोलता है ना मेरे को यार, जरूर पढ़ता हूँ मैं कमेंट यार जो भी। व्हाट डू यू थिंक Guys. हु कैन बी फरारी नेक्स्ट ईयर? आई थिंक फ्रेड ब्रेसोर विल बी इन फरारी. Yeah, we don't know Sorry, about the just kidding. drivers, do we? I don't know I about the think Science driver. will go for Audi. I think Science will go to Audi most probably. अभी आएगा कहाँ, अभी तो 26 में आएगा, तब देखते ना. सॉरी भैया बट मैक्स, ठीक है भाई, मैं समझ गया हूँ, तो मैक्स का बड़ा फैन है यार. इज देयर एनी चांस हैमिल्टन कैन गेट P3? व्हाट डू यू थिंक? यार कैसे यार, लेक्लेर्क इज लाइक 18 seconds ahead of Alonso and 19 or 20 seconds ahead of Hamilton. How can somebody? Oh, Ferrari has called Leclerc in to cover Hamilton. Nice. Ferrari just be like, copy Hamilton, copy Hamilton. They're putting the same tire on too. You nailed the voice as well. How did Piastri retire? He had a collision, Priyanshu. With Ooh. 2.7. What? Oh What? my God. What? Oh my God. This will be close. This will be Nice. close. Oh man, Ferrari got that right, huh? Like it was very Yeah. close. No, but Just touch and go. Leclerc's tires If are Hamilton, not. yeah, if Hamilton was not stuck behind Alonso, he would have been ahead of Leclerc. Yeah, that's absolutely true. बिल्कुल सही बोला. Hamilton's tire are 1 lap old. He's weaving. Hamilton DRS. Very interesting. Very interesting. इसको देखते हैं. This will be interesting, huh? I think, I mean, the Ferrari is fast on the straights, but on the with DRS around here, you can get past anybody. He was weaving because he had to like warm up his tires. Yeah. Yeah. He knows Would there's like a to go battle and coming. watch Formula One live, and second, that too in India if possible. I mean, why wouldn't I would want to go do that? On नहीं चाहेगा. मैं तो चाहूंगा कि यार जब ये 15 laps आई to थिंक go. तो इटली में जा रहा है ना? No, I'm going to Austria. Austria, perfect. Then I'll definitely coming to the Austrian Grand Prix next year. Oh, yes. I mean, I wouldn't be there in Austrian Grand Prix next year. Yeah. But I mean, करेंगे, plan करेंगे, कर सकते हैं. Let's do Silverstone together. British Grand Prix Silverstone, देखते हैं the साथ. worst Grand Prix to get to, dude. Too many rules अरे around Silverstone. dude, I'm Honestly. saying honestly I'm saying क्योंकि क्या है, बहुत सारे उसके म्यूजियम है ना, सब चिल करते हुए देखेंगे ना, एक आध तो फुटबॉल मैच भी देख लेंगे. और नहीं तो झुमरी तलैया में आ जाऊंगा तेरे लिए, तो बोल तो सारे, अरे क्या हाल वरुण, वरुण चौरसिया साहब, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप, हेलो नमस्ते, हाउ आर यू. दिस ट्रैक इज रियली वियर्ड. वियर्ड क्यों है भाई, कितना बढ़िया ट्रैक है. When did Verstappen take the lead? Verstappen took the lead in lap 17 as predicted rightly by Shub. विजय माल्या कहाँ गया, खा गया फोर्स इंडिया का. अरे उसी ने तो बनाई थी ऋषभ, कैसी बातें कर रहा है. किंगफिशर एयरलाइंस खा गई फोर्स इंडिया को. एंड सहारा. मोनाको जाओ, घटिया रेस है मोनाको, इतनी घटिया रेस है यार, इतनी घटिया रेस. मैं सिंगापुर जाना चाहता हूँ. आई वुड वांट टू गो टू सिंगापुर. Singapore is a good race. I would like to go to Japan. Japan is a very nice race. And सुजुका, like get a seat अमेजिंग around the ट्रैक. S's. Yeah. या बट मैंने सुना है ना, मोन्जा के पास में जो खाना ना बढ़िया मिलता है, खाना और वो जो Monza, बबलीज मिलती हैं, चीज मिलती है बढ़िया. bro, the worst race you can go to is the Italian Grand Prix. It's the most poorly organized Grand Prix. अच्छा, Most छोड़ poorly छोड़. organized. मतलब मना मैं कर गया दिया था मैंने. ना, इतना it was very very poorly organized. मैंने मजे बहुत किए हाँ, but that was because I knew like a little bit insider tricks. But if I did not know anything about that place, Insider tricks. Nice, if I did not know any place, like it would have been a proper pain. I am और like the रहने तक to train तक to get to the track. The British, अच्छा.
the British Grand Prix is just an expensive affair. Like you pay for everything and you have to plan everything from parking to transport to drinking your every bottle of water. It's just everything in the UK requires a fucking appointment. But So अच्छा I would ये like रेस to बहुत avoid अच्छी that होती है. thing. ये रेस बहुत अच्छी होती Austrian है. is very good. Belgium is ऑस्ट्रिया इज good. वेरी गुड. ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री इज रियली गुड. मेरा एक दोस्त है, मेरा भाई आशीष, Oh रहता है yes. ऑस्ट्रेलिया के अंदर. बारबेक्यू करते हैं यार ट्रैक के साइड में, एकदम मस्त कोरोना पी रहे हैं और बारबेक्यू कर रहे हैं. मैंने कहा तुम्हारा सही है यार. Even Austrian, yeah. Australian Grand Prix is something that is very, very high on my list. I would like to go to Melbourne. मेलबर्न अच्छे. You wanna come? शहर भी Melbourne? ठीक है. 5 बजे बाद खूब हाँ. लोग, कुछ काम नहीं गीत है. का भाई रहता है मेलबर्न में. हाँ, अरे उस घर है गीत उसका. के भाई रहता है चले फर्स्ट चले. टाइम. हाँ, मेरे पास 3 साल का वीजा भी है, मल्टीपल एंट्रीज. चलो आज ही चलो. है क्या मैं तेरे आता पास हूँ. वीजा ऑलरेडी? चलो हाँ चलो चलो. तो मेलबर्न. ऑस्ट्रिया जाके वापस ये बोल रहे हो कहाँ ऑस्ट्रिया, कहाँ ऑस्ट्रेलिया. This lap is epic. I am very surprised that in this entire F1 era, there's not a German Grand Prix. Like it's a shame Sorry? for Germany. I'm not even joking. There's What not a will बोलना? German Grand Prix. It's a shame. Got it. Like there's no German Grand Prix. It's a shame. I mean, I am doing shame to Formula One since Kailami is not there, since what Malaysian Grand Prix is not there, since Indian Grand Prix is not there. तो यार ये तो पैसे का खेल है यार. सऊदी अरेबिया के अंदर दूसरी रेस देने वाले हैं, यूएस के अंदर 3 दे दिए हैं. क्या है ये? कोई No, but शेम if you शेम see, yeah, but you see, there's like places like Hungary, Imola, on the race map. I would want to go either Especially Melbourne or like- Sao Paulo. Yeah, Interlagos भी अच्छी है यार. Man. Sao Paulo, my God, Sao Paulo की लड़कियां कितनी सुंदर Yeah, हैं yeah, भाई. Brazil. Oh, yeah. Brazil would be a good racetrack to go to. And that I've too, heard a lot of robbery stories though. A lot अरे of ठीक है robbery यार. stories. Like all मत करो शो a ऑफ, lot of, निकल जाओ. मत पहन के दो रोलेक्स. no, so basically, like Red Bull team on the pit wall and people who go on track are given a tag here, watch to wear only during the race, which they have to return after the race. It's all for the show. गए. Okay. हैं? And a lot of them have got looted and robbed in Brazil. So now they give fake tags at Brazilian Grand Prix to wear. ये तो वही हो गया भाई. ये तो जेम्स बॉन्ड का डायमंड बन चुका है भाई. नहीं, मोनाको ग्रांड प्री में जैसे जैगुआर के साथ हुआ था. Anyway, सादिक भाई इज इन द हाउस. सादिक भाई कैसे हैं? नमस्ते. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. शुभ, क्या हुआ? सादिक भाई का बर्थडे उसी दिन आता जिस दिन मेरा बर्थडे है. सादिक भाई, मैंने पूछा सादिक भाई आज आपका बर्थडे है क्या? हम दोनों का 16 जून को आता है. मैंने पूछा सादिक भाई आज आपका बर्थडे है क्या? सादिक भाई ने बोला हाँ. मैंने बोला सादिक भाई मेरा भी हैप्पी बर्थडे. सादिक भाई ने क्या पता क्या बोला? थैंक यू. सादिक भाई मजे ले रहे हो क्या मेरे यार? अपन तो दोस्त हैं यार, ये क्या बात हुई? I like it. Doesn't go like, I'm not gonna wish you. Just thank you. I'm not gonna wish you. You didn't wish me nicely. Las Vegas का सीन रहेगा. Yes, Las Vegas is one of the most costliest race. It's like the epitome of capitalism. Yeah, I think for how much you can buy a sandwich in Las Vegas, you can buy an entire race weekend in any European place. I don't know. Depends. Sandwich Caesar में क्या? And true, Nürburgring is legendary and Germany too financially is viable too. I don't know. Yeah, Sadi bhai, बिल्कुल सही. Should be यही बोला. It's a shame that it's not there on the track, on the grid. Yeah, I mean, you look at all the big brands. You have Audi, BMW, Mercedes, brands of that teams that are there in F1, and there's not a German Grand Prix. So, I think I can go for the cheapest race. I don't know which one is the cheapest race. The cheapest is actually Imola. Imola is dirt cheap. नहीं, जाने आने का खर्चा मिला के.
अरे यार, within Europe, Imola is very cheap. नहीं, अगर इंडिया से जाना होगा तो कौन? वरुण, तेरे को ही रिसर्च करनी पड़ेगी, हमको नहीं पता भाई। थोड़ी देर रेस देखते हैं। Even if you go from I mean, if you go from India, हाय सजल। maybe one of the Arabic countries. हाँ, अरे But मेरे को ये even पता है, अभी मेरा देख, दोस्त जाने गया आने था। का मेरा दोस्त गया था 2021 की अबू धाबी ग्रांड प्री निमित। हाँ, अरे वाह भाई, अबू धाबी ग्रांड प्री 2021 की, मेरे को पूछा उसने चल रहा है क्या? मेरे अक्ल में पत्थर पड़ गए थे, मैंने मना कर दिया था उसको। ग्रैंड स्टैट में था भाई वो। क्या बात है यार। उसको उसको You रेस missed के लगे थे you 2.5 missed लाख you रुपए, missed once. जाने आने का तो 50,000 कितने? रुपए। रेस रेस का 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए ग्रैंड स्टैंड, 3 डेज, 2.5 लाख रुपए, जाने आने का? 2.5 लाख रुपए। जाने आने का क्या, अबू धाबी तो पास में ही है। हाँ नहीं, but during those times it's hard to get a ticket normally, no? हाँ, ये है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, प्री बुक कर लो, वैसे ही साल भर के पहले हो जाता है। और आप रहना हो तो आप शारजा में रुक जाओ। शारजा बहुत दूर लग रहा है तो आप करामा में रुक जाओ, डेरा में रुक जाओ, अलबरशा में रुक जाओ, दुबई में। मतलब जाने आने का So 300 you दिरहम लगता है, कुछ नहीं है। so you can get a 3-day general pass in Imola for 100 euros, which is 8,000 rupees. सच में 9,000 rupees. 8,000? और आने जाने में 70,000 ठुक जाते हैं। फिर भी सस्ता है भाई। हाँ, और staying is around 50 euros a day. So you बट save भाई 3 days. प्लीज whoever goes, अपने स्विमिंग गियर्स लेके जाना। नो नो कंफर्मेशन की बाढ़ होगी। Imola is क्या होगा? टोटो और होनर को कुछ बवाल हुआ क्या? फिर से नहीं, चलता ही रहता है उनका। Could I also push on and do another stop or a little bit of pit stop training? like Verstappen तेरे बोला को pit जा stop वो training चाहिए करवाना। कर भाई। हाँ, तेरे को जो चाहिए कर। हाँ, तू मालिक है। डायलॉग में मेरी किडनी जाएगी, आने जाने में 2 किडनी। अरे नई इंडिया है, नई इंडिया के लिए 2.5 लाख क्या होते हैं? जीत भाई प्राइस मनी ने दे लेगा 2.5 लाख। आप गैस करो सबसे कि कौन से लैप पे वर्स्टैपेन P1 होगा, 2.5 लाख प्राइस रहेगा। अभी 2.5 लाख में जीत गए इस पूरे स्ट्रीम में। सही गैस किया मैंने, टू द लैप है कि नहीं जीत भाई? The worst example of stonking. Oh my God, ये क्या था भाई? 2.5 Now लाख I रुपए shall गए propose मुझे this. बैंक अकाउंट में, मुझे पता ही Now नहीं I था। shall propose monetized gifts for predictions because then I clearly have the advantage. हाँ, ये सही है। Yes, I mean I have the Yeah, advantage yeah. because of you. So Yeah, all the predictions are getting correct in hindsight for some reasons, हाँ? ये तूने सही है। P3 बोला था, एक लक जीत लग रहा है कि जीत आ रहा है P3 ऑक्टोपस। भैया, मैं मोदी जी बन जाऊंगा। No racial jokes यार, no religious, no political jokes, I'm just kidding. जय मोदी जी, जय भारत। Anyways, coming back to, come on यार, लुइस को तो ओवरटेक करना चाहिए ना मैन। यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ भाई? मुझे बता दे मैं क्या करूँ। प्रशांत बोल रहा है आई एम विद शुभ ऑन दिस टॉपिक। हाँ प्रशांत, क्यों नहीं, तेरे को कुछ प्रिडिक्ट करना है क्या? स्टूडेंट तो हूँ, अभी एसेट में किट नहीं है सिर्फ। नहीं, एसेट में आप हो, आपकी नॉलेज है, आप करो यार बढ़िया कुछ। शुभ गाइस, अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी सब इंडियंस के लिए। शुभ एक नया स्कूल निकाल रहा है भाई, अब मोटर स्पोर्ट के अंदर भर्ती होने का। मोटर स्पोर्ट के जितने भी ड्रीमर्स हैं उनको, चाहे कोई भी बैकग्राउंड से है, चाहे बीकॉम से, इंजीनियरिंग से, रेसिंग से हैं, चाहे वो उन्होंने आज तक अपनी नॉर्मल गाड़ी एक्टिवा भी नहीं चलाई है, शुभ सब सिखा देगा भाई। शुभ एंड हिज पार्टनर हैज ब्रॉट अप एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडियंस, जो अभी लॉन्च होने वाला है। वी आर अबाउट टू स्टार्ट क्रिएटिंग द हाइप। और क्या है कि सबसे अच्छी बात जो शुभ की मुझे लगी ना, अपार्ट फ्रॉम ऑल द रेस एंड स्ट्रीमिंग एंड ऑल द नॉलेज दैट ही इम्पार्ट्स टू अस, भाई कुछ करके दिखा रहा है।
ऐसा नहीं है सब बातें कर रहा हूँ, मैं बैठ के लाइव स्ट्रीम पे सिर्फ बातें करता हूँ, कमेंट पढ़ते हैं, अपन बकचोदी करते हैं, बट शुभ एक्चुअली में सपोर्ट कर रहा है। शुभ एक्चुअली के अंदर, इंडिया के अंदर जो अवेयरनेस लानी चाहिए वो शुभ लेके आ रहा है भाई। हैट्स ऑफ शुभ भाई। Thank you. Yeah, I mean, for those who don't know yet, we are creating Asia's first technical motorsport एशिया। academy. Asia's first. So yeah, we're going to go big. We're going to cater to all crowds, from school children to हिंदी हिंदी बोल, women in समझ में आएगा लोगों को। हाँ, तो बच्चों से, कॉलेज स्टूडेंट से, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, एंड स्पेशली वुमेन। मतलब हम लोग वुमेन इन इंजीनियरिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। सो वी आर गोना, मतलब अब वी आर किकिंग ऑफ, हम लोग चालू कर रहे हैं पायलट प्रोग्राम विद इंडियाज फर्स्ट रेस इंजीनियरिंग वर्कशॉप, जो हम मुंबई और चेन्नई में करेंगे इस अक्टूबर में। सो वी आर गोना लॉन्च द रजिस्ट्रेशंस और किक ऑफ द रजिस्ट्रेशंस open on 18th of August. That's when we're expecting. So you will hear a lot more from us, a lot more from me and Geet talking about what the program is all about. And the idea is to create something in India, in Asia, where students get the kind of education, मतलब जो जिस चीजों के लिए हम 40-50 लाख भर के बाहर जाके पढ़ते हैं, उससे you make it affordable कि तुम लोग इंडिया में भी सीख सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो ऐसा, और ऐसी चीजें सीख सकते हो जो यहाँ पे इंडिया में सिखाते ही नहीं है। सो दैट आइदर कि मतलब आपके पास पैसे हो तो आप वो सीख के बाहर अच्छा मास्टर्स करके आप अपना करियर ग्रो करो, वो अपना पोर्टफोलियो बनाओ कि अगर आप मास्टर्स करोगे उसके बाद तो आपका पोर्टफोलियो इतना अच्छा बने कि जो बाहर से सीखते हैं, जिनके पास ये एडवांटेज रहता है मोटर स्पोर्ट कल्चर का, यू कैन कम्पीट विद देम फॉर एन एक्चुअल जॉब। और जिन लोगों के पास उतने पैसे नहीं है उनको भी एजुकेशन मिले। हमारे भारत में भी अच्छे अच्छे नाउ टाटा एंड so I think they are going to be world class courses, so they are not going to be as cheap as we would all like them to be. अभी जो पायलट वर्कशॉप चालू कर रहे हैं वो 35,000 का रहेगा। इट्स अ 4-day 35,000 रुपए के अंदर 40 लाख का नॉलेज मिल रहा है। क्या बात कर रहा है तू यार, कोई पैसे थोड़ा ना होते हैं, तो तू फ्री में दे रहा है लोगों को। हाँ नहीं, सो द एक्चुअल मॉड्यूल जो हम लोग मतलब दैट विल बी कंपीटिंग विद समथिंग दैट यू वुड अदरवाइज मतलब तू सीखेगा बाहर जाके, दैट विल बी अराउंड 2 to 3 lakhs, जहां पे हम लोग 3 महीने के लिए 2 to 3 lakhs. The idea is to keep it to 10% of the cost that you would otherwise spend to go abroad. और हम लोग ऐसे पार्टनरशिप भी कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे भी like we are partnering with University of Bedfordshire to, for example, to do your masters abroad. और अगर आप मतलब it's going to be like a foundation course, मतलब आप 4 लाख दे के हमारा फाउंडेशन कोर्स कर रहे हो, तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर में मास्टर्स करने जा रहे हो तो आपको वहां पे 10% ऑफ मिलेगा। So anyways, you're spending that money with us and you're getting that money off. So it's as well as doing the course for free. So we are coming up with innovative financial models जो बच्चों के लिए it doesn't burn a big hole in their pocket. Let's see. The idea is कि भाई इंडिया से ही तो जा सकता है F1, तेरी पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि तू इंडिया से ही सिलेक्ट हो सकता है। That is the dream. Amazing. In 1 or 2 years. और हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एक कोर्स मतलब बस ऑनलाइन कोर्स ना करें। So the entire point of the academy is that you're going to get hands-on experience. Like the unique thing about this academy is that India में हम लोग आपको मोटरस्पोर्ट का hands-on experience देंगे। So very excited to talk more about it. अभी चालू होने वाला है, एकदम bombastic release करेंगे 1 week before the next race happens. So Geet Bhai has been a big supporter of this, so looking forward to working with everybody that I can and making the sport accessible to engineers. We've only dreamt of drivers, कोई ड्राइवर पहुंचेगा, कोई इंजीनियर पहुंच रहा है क्या ऐसे, राइट? कोई प्लेटफॉर्म बना है क्या उन लोगों के लिए? बढ़िया भाई। So yeah, ओपी है भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, रेस तो वैसे ही चल रही जैसी चलती है हमेशा, चल गया। मैक्स वर्स्टैपेन का सिक्का वापस चल गया, पेरिस कुछ कर नहीं पाया, पर लेक्लेर्क ने होल्ड ऑफ कर लिया भाई, ये तो अच्छी बात है भाई। I think we are getting a lot of questions about the academy. Yeah.
Is it? We'll answer everything, yeah. कौन से भैया स्टेट में BA होगी academy? Varun's asking. The academy is going to be the hands-on that we promised is going to be in Mumbai to begin with, अच्छा, and then the eventual idea is that in the third year we might open up academy second branch in Goa, and then very good. next year we might go abroad. गोवा वाली मैं अटेंड करूंगा यार, गोवा आके है गोवा, करेंगे। वही तो ना, अभी तूने जो बोला ना कि भाई गोवा में लोग आएंगे और we'll be putting it around, we'll be making it around the new airport so it's accessible. तो गोवा वाले में बनाएंगे भाई, 2 साल के बाद मैं भी आ रहा हूँ तो पूरा करेंगे. What is the qualification required? The depends on which course. So by the time I think with what we are kicking off, मतलब जो race engineering workshop है, we are ideally looking for engineering students having a passion in race engineering or willing to learn that, because race engineering is a subject where you just need to be street smart. You don't need to be a geek. You just need to come from a science background, and you need to be a bit street smart. You need to be quick. That's what race engineering is all about. If you have these two qualities, then we can teach you stuff that is necessary to become a race engineer. रुक जा, मैं So that's समझाता what we are हूँ, going to do. मैं समझाता हूँ। देख क्या है कि क्योंकि फाउंडेशन कोर्स है, उसके अंदर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, एप्टीट्यूड की जरूरत है। अगर आपको इंजीनियरिंग समझ में आती है तो इंजीनियरिंग में जाओ, मार्केटिंग आती है तो मार्केटिंग में जाओ, तो ये फाउंडेशन कोर्सेज करवाएंगे। तो अभी क्या है, जब एक्चुअल में रिलीज होगा ना, तब पूरी डिटेल इनकी वेबसाइट पे आ जाएगी। वेबसाइट को बंद तो गई है पर लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बहुत ऑस्पिशियस लोग हैं, मुहूर्त देख रहे हैं, इन्वेस्टर भी हैं इन लोगों के पास। तो क्या है कि बड़ा काम करेंगे। मैं जरूर आपको अपने चैनल पे जितनी नॉलेज है सारी इम्पार्ट कर दूंगा, मुझे इस चीज की, और इसके लिए मुझे 1-2 फ्री की क्लासेस भी देंगे ये लोग, और वो 2.5 लाख रुपए जो मैंने इनको प्रॉमिस करे थे, अब ये मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं, तो just kidding, but 4 laps left guys, 4 laps left and Leclerc has maintained the position. हैमिल्टन लेक्लेयर को कुछ दिन का भी नहीं बोल पाया है। ओलोंजो के लिए अच्छी रेस रही है, वैसे 26 सेकंड पीछे, बट स्टिल इट्स ओके। नॉरिस के लिए बहुत ही अच्छी रेस रही है। 1 सेकंड, sprint. Norris started on 7th itself. He's on 7th again. Russell के लिए better race रही है, you could say, from P6 to from P8 to P6. Alonso के लिए अच्छी race रही है, you know. He's only in P5, so that's good. देख, मैं बता रहा हूँ, ये अपने भाई लोग हैं, इनको ये समझ में आता है। अरुणेश बोल रहा है कि भाई गीत भाई वाला ज्यादा समझ में। यार मैं जानता हूँ अरुणेश, प्लीज कीप इट अबाउट। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हेलो सौमित, सबसे पहले तू कमेंट करता है, फिर आता ही नहीं, वो समझ नहीं आया कैसा बंदा। मैं तेरा कमेंट देखा था इतने दिन बाद, बढ़िया हूँ सौमित भाई, आया नहीं भाई। 4 लैप रह गए, बढ़िया कब हूँ, आया? बढ़िया हूँ भाई। I'm so happy you're gonna get a break from F1 for 1 month. I have too much to do in life. Life is short. Let's do something else in Formula 1. Nice. What about Drivers Academy? I don't know, Drivers Academy. F1 Drivers Academy की बात कर Drivers रहा है Academy, अरे पूरा F1 ने academy बनाया है, proper pathway is there. I think he's talking about your Drivers Academy or something, I don't know. थोड़ा We elaborate don't have करेगा? a driver academy. I mean, look how far Verstappen is of Perez. He's 18 seconds ahead of Perez. कोई मतलब ही नहीं है यार रेस करने का। One of the most dominant performance already, यार. From P6 to now 18 seconds. But the last time also he did this. I think last time also he was P7 lap 17 के अंदर ही शायद आगे आ गया था, P14 से P1 or something around that. And then he was like faster than everybody else, half a second. It's one of the very strong tracks of Max Verstappen. He likes this track. He's really good. I mean, where he's really good at is in the last 2 turns. That slow speed chicane, like he gets a braking done really, really well and gets a really good exit. अरे कोई नहीं मेरी जान समित यार,
क्या बात कर रहा है यार, अपन तो दोस्त हैं, क्या हो गया? दे रहा है, दुरुस्त है भाई, तू आ गया, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। Prediction on Verstappen's lead time. Not bad. Let me see if I can get this right. भाई यार इसको घर भेज दो, सीजन की ट्रॉफी साथ F1 थोड़ा फन तो होगा, सही बात है यार। इसको पहले बोलो तू, तेरे को मिल गई, तू घर जा, हो गया तेरा यार, तू तू ले लेना और घर जा, हमको बाकी रेसेस देखने दे। अरे वो घर जाके भी वो सिमुलेटर पे ही F1 खेलेगा, वैसा बंदा है वो। सही बात है, जिसको मतलब क्रेजी है वो थोड़ा सा, आए बढ़िया। I mean, I was listening to this this podcast in which there was Jos Verstappen, and he was like, "So how is Verstappen at home? How is Max at home?" And How's he's the like, Verstappen? he's really, yeah, हाँ, he's like, he's really relaxed. He's like, he doesn't talk about F1 at all in the house. अच्छा, Like, there's no F1 happening. There's no chat about F1 at home, and he just मुझे gets into the एक बात weekend बता, and gets the job done. मुझे तो लगा था अंग्रेजों के बच्चे अलग अलग रहते हैं अपने माँ बाप से, हमारे जैसे अपने घर पे रहते हैं क्या वो लोग भी? अरे Europe is very different. Europe is अच्छा, not like this whole US UK culture. ये अपना जो हाँ, यूरोप का कल्चर है ना, वो बहुत थोड़ा अलग है. मतलब पीपल स्टे टुगेदर, एंड इफ दे डोंट स्टे अच्छा, टुगेदर दे स्टे इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी. अच्छा, लाइक आई हैड एन इटालियन फ्रेंड. मेरा जो हम्म, दोस्त था इटालियन फ्रेंड, वो एवरी ऑल्टरनेट वीकेंड अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखने जाता था. अच्छा, सो आई वाज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो मेरे को एकदम सरप्राइजिंग लगा बाहर जाके, इज माय एंटायर नोशन. अच्छा कि बाहर के लोग मतलब they're not this family oriented people, and they don't give a shit about their family. They're very disconnected. I think that was a big eye opener for me, that in Europe people are as connected to their families as people here in India. you know हम्म, they are हम्म, very connected to their nieces, their nephews, their grandparents, and they make an effort, a proper effort for their family, which is something that I've found very, very surprising. Hamilton in pits, Fastest lap. fastest lap. Do you think F1 will become as big as cricket in India? Nahi, no, it will never. Cricket, Uh, bhai. finally, Leclerc getting pole after a long time. It's not really a pole when a person is like 0.8 seconds behind a driver. Not really a pole. Jesse Max win, they'll probably replace him with Ricardo to make everyone somewhat interesting. Yeah, that's true. But Max will wanna get all the points that he could. This is what I think. Netherlands have a different culture. Achha, I don't know. Bro, watch Godfather movie. देखिए. Will Max dominance continue in 2024? Are too early to predict here. Why is Max winning everything? Because he's the best right now on the grid. It was a risky move. Yeah. अच्छा तू उसके हैमिल्टन के मूव के बारे में बोल रहा है? शुभ भैया will make F1 bigger sport बिल्कुल in भाई. India hopefully. बिल्कुल बोल भाई, बोल. अभी देखो. बिल्कुल. बिल्कुल. We'll make F1 accessible. How it grows as a sport is depends on F1. But जिन लोगों को भी पसंद है, we'll make it more accessible. यार पता है, That much I I can have guarantee. I have a small request to everybody who's watching and who's in general. Yeah, F1 is a form of motorsport. Let's make motorsports more interesting in India. फर्स्ट पहले हाँ. मोटर स्पोर्ट करते हैं, अभी मोटो जीपी आ रहा है तो उसको सपोर्ट करते हैं, फिर अपने पास रैलीज हैं उनको सपोर्ट करते हैं, फिर अपने पास इतने सारे अपने पास जैसे ना ये F4 आ रहा है उसको सपोर्ट करते हैं, देन वी हैव दीज अदर ओपन व्हील चैंपियनशिप्स उनको सपोर्ट करते हैं, तो लेट्स मेक मोटर स्पोर्ट IRL, सक्सेस. IRL, IRL, F4 F4 सब आ रहा है यार. this year. हाँ. अच्छा सुन ना गीत. बोलना. I don't know if you must have direct entry into these places, I assume. But me and Omkar were just discussing the other day कि Geet, because we will have direct access to
F4 because we are going to partner with them. But we were just talking that गीत भाई को लेके जाएंगे F4 में. So I was like, he will directly have his own access, but yeah, if he does, इसको पक्का लेके जाएंगे. चलो चलो चलो. कहाँ हो रही रेस? चेन्नई में? 2 रेस चेन्नई में, 2 रेस दिल्ली में, 1 रेस गोवा में. तो गोवा में दिसंबर 5 स्ट्रीट सर्किट मिरामार. Done. I will just have to see यार my condition right now, and then उसके अलावा done. Also the race. Amazing. Max Verstappen wins another one. Max Verstappen and Red Bull has done like 15 wins in the entire season till now. एक तरफा एक छत्र राज है भाई. एक छत्र राज है. Amazing. पहले तो ब्रॉडकास्ट राइट दिला दो F1 के. अरे है ना F1 टीवी प्रो पे? क्या है तो सही बस ठीक है ना. अभिजीत बोल रहा है फॉर्मूला ई भी है. हाँ इस साल तो थी, मैं गया भी था. अब वॉच अलोंग करो, हम सपोर्ट कर रहे हैं. अरे थैंक यू रिनेश यार, जाने तो मेरी. एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर अलोंसो वाज लुकिंग स्ट्रांग गेटिंग पोल, बट अभी उसका पेस खराब क्यों हो गया है? देयर अपग्रेड्स आर नॉट वर्किंग, प्लस दे हैव नॉट ब्रॉट अप एनी लाइक बिग अपग्रेड आफ्टर like the 6th or the 7th race, so that's also there. Hamilton gets the fastest lap. वरुण बोल रहा है मेरे पास फ्री में है. F4 की बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? मैक्सिमम परफॉर्मेंस बाय मैक्स वर्स्टैपेन, बट बहुत ही क्लीन रेस रही है नहीं? बहुत ही क्लीन रेस रही है. एक एक्सीडेंट के बाद. सर आप इंडी कार देखते हो? नहीं यार, मैं इंडी कार देखता था. कुछ एक मेरे दोस्तों ने बोला कि इंडी कार इज द शिटिएस्ट थिंग एवर इन द वर्ल्ड. मैं देखना ही बंद कर दिया. क्यों? गुरमीत और मोहित भाई थे उस स्ट्रीम के ऊपर, तो उन्होंने मना कर दिया, तो मैं देखना ही बंद कर दिया. F1 की वेबसाइट मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था. अच्छा सुनो ना गीत भाई. हाँ बोलना. Did you know that I मतलब मेरा बर्थडे था couple of days back 28 जुलाई पे. तो उसकी वजह से I said okay इस साल में मैं कुछ अच्छा करूंगा. So I landed up. Thank you very much. I put out a course out in the world of F1 aerodynamics, a very affordable course which is a compilation of a lot of my YouTube videos in the right order. और मैंने थोड़े gaps fill किए हुए हैं उस कोर्स में, ताकि वो उसमें baby step ले सके. So it talks about my journey into F1, it talks about my experiences, it talks about F1 aerodynamics के basics, मतलब जो why aerodynamics is important in F1. It talks about case studies कि भाई ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन case studies मजा आता है ना case studies से. And then it talks about how you can get into F1 in detail, especially if you're as an engineer. और उसके बाद if you are able to complete that, then we give you some extra stuff with a one-on-one session, aero session and all. तो ये course मैंने Udemy पे डाला है. I'll send the link across. और अगर जनता चाहे तो it's like around a 5-hour course, so it should be possible. Send me the link. Send me the link. I'll put it on my story. Okay वरुण, bye bro. Next Max weekend पर मिलते हैं. नेक्स्ट मैक्स वीकेंड पर मिलते हैं. बिल्कुल मेरी जान वरुण, बिल्कुल. विल ट्राई टू बी हियर एज वेल. ऑस्कर बेचारा, अरे आएगा यार, आएगा, उसका टाइम भी आएगा. इज रोहन जोशी एवर कमिंग टू द स्ट्रीम? रोहन जोशी, आई डोंट नो. मैंने कभी पूछा नहीं रोहन भाई से. आई डोंट नो. लेट्स सी. तो हमारी शक्ल बुरी लगती है क्या रोनेश? हैं? I have been pursuing to get more glamour to the show, but people have prior but yeah, the glamour is not interested. Our streak of my girlfriend predicting correctly the positions has continued. 3rd race in a row. So 3rd race in a row. Not bad. Not bad. Not bad. That's just a you problem. Shut up, it's a you problem. सुनाई नहीं दिया, पर आवाज बहुत मीठी है भाई. It's like सुनाई नहीं दिया, लेकिन आवाज बहुत मीठी है.
तू तो प्रॉपर फ्लर्टी है यार. मतलब अरे कहाँ भाई, एकदम कहाँ फ्लर्ट. अरे उसकी जीत भाई के का स्वैग दिख रहा है. चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आई विल शेयर शुभ का, मैं ना यहाँ पे भी शेयर करता हूँ. जस्ट वन सेकंड यार. I am sharing. Go and check out Shub's Udemy course. It's going to be a fantastic course, I'm sure. I will check out right now as well. But मैं स्टोरी में, इंस्टाग्राम वाली स्टोरी में भी डालता हूँ. अच्छा यहाँ दे दिया शुभ ने. थैंक यू. मुझे लगा वो करना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा. But guys, here it That's is. all Go right. and Like check out. जब भी है. Yeah. Guys, go and check out the course for sure. Use my referral code. I don't know referral code क्यों लिखा है. Oh, there is a referral code called Happy Birthday 28. Should you get a 50% discount Okay. on that? 50 Happy fucking birthday percent. Okay. 28. Happy birthday 28. Nice. How much do you get? Udemy is strange. G in Geet stands for glamour. Thank you, Arunesh. Here, Arunesh knows how to flirt. I have a man crush on you, Arunesh, now. Man crush. Oh my god, that was quick. Man. That was very quick. Amazing, guys. Thank you so much. Thank you for joining in, everybody. Thank you for joining in with us. Let's meet you in the next time, wherever the next race is. And I think it's going to be a long break before we join in, but I'm sure I will try and make more videos for you guys. Anyways, thank you so much for all your love and all your patience. Bye-bye. Take care. Shub, bye bol de. Bye everyone. Thanks for showing up, and hopefully we could do this again after the summer break. So looking forward to that. See ya, guys.